તો આગળ વાત કરીશું વડોદરા શહેરના વરાસિયા વિસ્તારની, જ્યારે કુખ્યાત સિંધી ગેંગના હેદી સિંધી સહિત 9 શખ્સો સામે રાજ્ય ગુસ્સી ટોક હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આ ગેંગ પર દારૂની હેરાફેરી, ખંડણી, મારપીટ અને લૂંટ જેવા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે। વડોદરા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ગુનાખોરી આચરતી કુખ્યાત સિંધી ગેંગ વિરુદ્ધ પોલીસે ગુસ્સીકો અને તે लगाम कसी है। सिंधी सहित कुल 9 सागरतों ने गुजरात आतंकवाद और संगठित गुना नियंत्रित अधिनियम हेठळ गुनोनो अधिक कड़क कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। पोलीस तपासमां बहार आव्युं छे कि अल्पु सिंधीनी हरी सिंधी वच्चे अगाऊ मित्रता हती, जे बादमां दुश्मनीमां फेरवाई गई हती। गैंगने वॉरनी शरूआत थई हती अने गैंगना सभ्यों अने राज्योमांथी गैरकायदेसर विदेशी दारूनी आयात करी वडोदरा शहर सहित विस्तारों में नेटवर्क चलावता पोलीसे आ केस में नरेन्द्र, रोहित, दीपक और भरत सहित 4 आरोपीओं की धरपकड़ कर लीधी है और कायदो और व्यवस्था जाळववानी वडोदरा पोलीस द्वारा गैंग सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवता वडोदरा शहरना असामाजिक तत्वों में फफड़ाट फैलायो है। समग्र मामले वडोदरा शहर पोलीस डीसीपी झोन 4 एंड मेकवान पत्रकार परिषद योजी और विस्तार में माहिती आपी हती। वडोदरा शहरना माननीय पोलीस कमिश्नर साहेब श्री અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી સેક્ટર 2 નાઓની સૂચના માર્ગદર્શન હેઠળ વડોદરા શહેરમાં વિદેશી દારૂનો વેપાર કરતા અને ગુના આચરતા ઇસમો વિરુદ્ધ સખત કાર્યવાહી કરવા અને તેઓના વિરુદ્ધ ધોરણસર પગલાં લેવા માટે સૂચના અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ। જે સંદર્ભે વારસિયા વિસ્તારમાં हिमांशु उर्फे हेरी लुधवाणी नाओ द्वारा एक संगठित टोळकी बनावीने विदेशी दारूनो बहारथी मंगावीने अने तेनो जुदा जुदा व्यक्तिओ मार्फत वेचीने गुनाहित प्रवृत्तिओ आचरवामां आवती हती अने आ टोळकी द्वारा खूब ज मोटा प्रमाणमां बहारथी विदेशी दारू मंगावीने वडोदरा शहेरना जुदा जुदा विस्तारोमां तेनो वेचाण करवामां आवतुं हतुं અને આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિને નાથવા માટે ગઈકાલે વડોદરા શહેર પોલીસના વારસિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ ટોળકી વિરુદ્ધ ગુસ્સી ટોકનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। જેમાં ટોળકીના મુખ્ય આરોપી હિમાંશુ ઉર્ફે હેરી લુધવાણી અને અન્ય સાથીઓ વિવેક ઉર્ફે બન્ની, અનિલ ઉર્ફે બોબડો, रोहित उर्फे बाबलो शर्मा, रफीक शाह दीवान, वरुण उर्फे जेटली नंदलाल, दीपक उर्फे दीपू लालवाणी, भरत उर्फे धीरज नामाणी, नरेन्द्र उर्फे गणेश डेडर नाओ विरुद्ध गुस्सी टोकना कायदा हेठळ गुनो नोंधवामां आवेलो छे। तेमज अत्यार सुधीमां कुल 4 आरोपीओनी अटक करवामां आवेल छे। जेमां रोहित राम अवतार शर्मा, दीपक उर्फे अन्नू लालवाणी, भरत उर्फे धीरज नामाणी, नरेन्द्र उर्फे गणेश उर्फे डेडरनो समावेश थाय छे। आ गुनानी तपास हाल एसीपी ए डिविजन करी रह्या छे अने अन्य आरोपीओ छे तेओने पण धरपकड़ करीने गुस्सी टोक हेठळ कार्यवाही करवामां आवशे। हालना जे पकड़ायेला आरोपी छे तेओना रिमांड मेळवीने तेओनी गैरकायदेसर प्रवृत्ति अने गैरकायदेसर प्रवृत्तिओ द्वारा मेळवेल मिलकतोनी तपास करीने तेने टांचमां लेवानी कार्यवाही वगैरे तमाम कार्यवाही करवामां आवी रही छे।